A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start our chapter number 7. The name of this chapter is Hickory, Dickory, Dock. Yes, today we will discuss the word meaning, question answer of this chapter. Now, before starting this, I would like to show an animated video of this chapter. Okay, please have a look. Hickory Dickory Dock. Inside the hollow wall of an old house, there once lived a family of mice. There was Mamma Mouse and her 3 children named Hickory, Dickory, and Dock. Once, Mamma Mouse had to find food for her little ones. So when night fell and the people in the house were asleep, she quietly crawled into the pantry. There, she saw a barrel of flour and felt happy because she knew she could easily cut through the wood. But it was nearly morning, so she decided to go back and come for the flour again the next night. The next night before leaving, Mamma Mouse kissed each of her children and said, "Be good and don't go out of your nest till I come back." When they were left alone, little Dock could not sleep. "I wish I could go with Mama," he said. "It's no fun to stay here all the time. She will take us when we are big," replied Dickory. "We are already big," said Dock. "I want to go out into the world and see what it looks like." "I know a way," said Hickory. "But Mama will be angry if she finds out." "We won't tell her," said the naughty Dock. Yes, said Dickory. "All right," said Hickory. "I'll take you through the hole that I have discovered." So the 3 started off and soon came to a crack in the wall. Hickory stuck his head through and found everything quiet. The family that lived in the house was fast asleep. He passed through the crack, followed by his 2 brothers. Their little hearts beat very fast because they were afraid of being seen. They quietly crept over a thick carpet and soon came to a stairway. "Let's go down," said Dock. So they went down the stairs and reached the hall, and here they were greatly surprised by everything they saw. The most wonderful of all things was a tall clock that stood upon the floor and ticked out the minutes in a serious voice. When the little mice first heard the ticking of the clock, they were terrified and huddled close together. "What is it?" asked Dickory in a whisper. "I don't know," replied Hickory. "Is it alive?" asked Dock. "I don't know," answered Hickory. Then they saw that the clock paid no attention to them. It just kept ticking away. So the 3 brothers felt less frightened and began running about. Suddenly, Dickory let out a squeal of joy. The brothers came running to him. Lying in a corner was half a bun. The 3 mice ate heartily until they finished the last crumb. Then Dock came to the clock and looked at it curiously. "It makes so much noise," he thought. "I'm going behind it to see what I can find." At the back of the clock, he found a hole and slipped inside it. Now he could hear the ticking much louder than before. When he looked up, he saw something shining brightly and thought it must be good to eat. So he ran up the sides of the clock until he came to a shining wheel. Just as he was about to bite it and see what it tasted like, there was a loud bang. It was 1 o'clock and the clock had struck the hour. The huge gong was just beside Dock's ear and the noise made the poor little mouse almost deaf. He screamed in terror and ran down the clock as fast as he could. When he reached the hall, he saw his brothers running up the stairs and he ran after them with all his might. It was only when they were safe in their nest again that they stopped to breathe. When Mamma Mouse came back in the morning, they told her of their adventure. She said, "You see, my dears, I told you not to leave the nest. What if someone had seen you? You should listen to me." Hickory, Dickory, and Dock never ran away again.
Now students, so let's start the dictation words of this chapter. Number 1, crawled, crawled, which means moved slowly, मतलब धीरे धीरे मूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, crawled. Number 2 is here pantry, pantry. Yes, pantry means a small room for storing food. Clear? Number 3 is here discovered, discovered, discovered means found. Okay. Number 4 is here quietly, Quietly. Repeat again. Yes, it's pronounced is quietly. Number 5 is here wonderful. Yes, wonderful. So you have to write the spelling wonderful. Wonderful means yes, amazing. हम बोलते हैं आश्चर्यजनक, तो here we use as a word wonderful. Number 6 is here frightened, Frigstened. Frightened means yes, डरा हुआ. Yes, we say also fearful, afraid. Here we use as a word frightened. Number 7 is here screamed, Screamed. Scream. Yes, scream means chillaya. Yes, another word is here we use as a cry, yell. Okay. Number 8 is here adventure, Adventure. Adventure, another word we use as a courage. Okay, we use as a हम बात करते हैं adventure क्या means साहसिक. Okay, so these are the dictation words of this chapter. So let's start the word meaning. Yes, number 1 is here crawled, crawled. Crawled here means moved slowly, धीरे धीरे क्या करना, move करना. Here आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, crawling करते हैं. हम उसको क्या बोलते हैं, crawling. घुटनों के बल रेंगने को हम क्या बोलते हैं, उसको crawling. तो here we use as a word as a crawled in this chapter. They moved slowly. Number 2 is here pantry, which means a small room for storing food. जहां पर हम अपने फूड को स्टोर करते हैं, उस छोटे से रूम को हम क्या बोलते हैं, pantry. Number 3 is here discovered. Discovered means found, मतलब क्या पाया आपने, क्या आपने खोजा. Yes, we use as a word discovered. Number 4 is here terrified. Okay, terrified which means scared. Yes, अब scared means terrified means डरना, है ना. Number 5 is here huddled close together, which means stayed very close to each other. मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हमने देखा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कि जो माउस थे उन्होंने जब जैसे बैंग बजा क्लॉक का, तो वो बिल्कुल घबरा गए और वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में आ गए. तो which means we use as a word huddle close together means stay very close to each other. Okay. Number 6 is here heartily, which means happily. Clear? Number 7 is here struck the horn. अब देखिए जो हमारी जो क्लॉक थी वो क्या करती है, स्ट्रक करती है द हॉर्न को. तो here we use rang once, एक बार बजना. Clear? Next is here, number 3 is here make sentences. You have to make the sentences of these words. Now number 1 is here terrified. You know the word terrified. Terrified means scared, डरना. Yes, Mohan is terrified of heights. Mohan किससे डरता है, heights. जो ऊंचाई होती है उससे मोहन को क्या लगता है, डर लगता है. Okay, here we use as a word terrified. Number 2 is here crawled. Yes, Tom crawled under his bed. अब जो Tom क्या कर रहा है, अपने बेड के नीचे क्रॉल कर रहा है, मतलब मूव स्लोली, धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. नंबर 3 इज हियर डिस्कवर्ड. यस, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस. जो अमेरिका है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई, कोलंबस के द्वारा. यस, द मीन्स ऑफ डिस्कवर्ड, यस, फाउंड, खोजा, है ना. नंबर 4 इज हियर फाउंड. आल्सो वी यूज एज अ वर्ड फाउंड. फाउंड मींस आई फाउंड, मैंने पाया, खोजा, है ना. आई फाउंड द बुक इंटरेस्टिंग, मैंने पाया कि जो बुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मीन्स रुचि करती. नंबर 5 इज ये स्क्रीम्ड. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, येल, क्राई, है ना. आई स्क्रीम सो लाउड माई डॉग गॉट स्केयर्ड. मैं बहुत तेज चिल्लाया, है ना. आई स्क्रीम सो लाउड सो माई डॉग गॉट स्केयर्ड. तो मेरा डॉग क्या हो गया, डर गया. तो मैं इतना तेज चिल्लाया कि मेरा डॉग डर गया. Okay, so now let's start the question answer of this chapter. Now question number 1 is here. Why did the 3 mice decide to go through the crack in the wall? Answer is the 3 mice decided to go through the crack in the wall to go out and see what the world looked like. जो तीनों mice हैं उन्होंने निश्चय किया कि इस wall की जो crack है उससे बाहर जाने का, क्योंकि to go out हो जाना चाहते थे, देखना चाहते थे कि world किस तरीके से दिखता है. To see
what the world looked like, ये हमारा संसार किस तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, why did they find in the hall, उन्होंने हॉल में क्या पाया? so they saw many wonderful things and a tall clock in the hall, उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा क्या मतलब वंडरफुल थिंग्स, वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक थिंग्स देखी, एंड अ टॉल क्लॉक, बड़ी लंबी क्लॉक देखी, कहां पर देखी उन्होंने? इन द हॉल। क्लियर? Next one, what did the three mice do when they heard the ticking of the clock? तो तीनों माइस ने क्या किया जब उन्होंने क्लॉक की टिकिंग को सुना? हर्ड मीन्स क्या? उनकी जो वॉइस थी उसको, साउंड को सुना। तो क्या किया उन्होंने? The three mice huddled close together. Huddled close together अभी अभी हमने स्टडी किया कि मतलब stay very close to each other। जैसे ही जो हर्ड करा उन्होंने, जैसे ही क्लॉक की टिकिंग की आवाज सुनी, तो तीनों जो माइस थे, तीनों ही जो मम्मा माउस के जो किड्स थे, वो क्या करे? हडल क्लोज टुगेदर, मतलब एक दूसरे के पास में, बहुत पास आगे। क्यों आगे? क्योंकि उनकी जो वॉइस थी, जो जैसे ही जो क्लॉक की जो टिकिंग थी, वो जैसे ही 1 आवर पे टिक हुई, तो इतना बड़ा बैंग उसको क्या सुनाई दिया कि मतलब बिल्कुल इतनी तेज वॉल्यूम थी, इतनी तेज साउंड थी कि वो एक दूसरे से क्या हो गए? दे close to each other. Now, number 4 is here. What did dog do after eating the bun? अब बताइए, after eating the bun, ये बन खाने के बाद डॉग ने क्या किया? देखिए, after eating the bun, dog slipped inside the hole behind the clock. मतलब बन खाने के बाद डॉग ने सोचा कि ये देखते हैं कि क्लॉक क्या है, इसके पीछे उसने एक होल देखा, उसने कहा कि देखते हैं कि इस क्लॉक के अंदर क्या है। तो नाउ डॉग स्लिप्ड इनसाइड द होल बिहाइंड द क्लॉक, तो क्लॉक के पीछे होल के बल में वो क्या किया? वो स्लिप हो गया। कहां पर? उस होल में। तो डॉग स्लिप इनसाइड, डॉग स्लिप हो गया अंदर द होल, मतलब किसके अंदर? द होल जो था उस घड़ी के पीछे, बिहाइंड द क्लॉक। क्लियर? नंबर 5th क्वेश्चन इज हियर, व्हाई डिड द थ्री माइस रन बैक होम? जो तीनों माइस थे वो घर क्यों चले गए? नाउ आंसर इज व्हेन द क्लॉक स्ट्रक द हावर। ओके, द थ्री माइस वर टेरिफाइड एंड रैन अवे। जैसे ही क्लॉक ने स्ट्रक द आवर, एक स्ट्रक किया, और फिर तो जो तीनों माइस वर टेरिफाइड, तीनों ही माउस क्या हो गए? डर गई, एंड रेन अवे, और वहां से भाग गए। तो तीनों ही क्यों भाग गए? क्योंकि उसका जो क्लॉक का जो स्ट्रक किया, जैसे ही तो उसका जो साउंड था, क्या लाउड साउंड था, उससे वो क्या हो गए? टेरिफाइड हो गए, वो डर गए और वो भाग गए। क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, रीड दिस लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस। नंबर 1 लाइन इज हियर, बी गुड एंड डोंट गो आउट ऑफ योर नेस्ट टिल आई come back. Okay, now who said this and to whom? ये वर्ड्स किसने कहे और किसको कहे? तो बी गुड, अच्छे रहो, डोंट गो आउट ऑफ योर नेस्ट, अपने नेट से बाहर मत निकलो, टिल आई कम बैक, जब तक मैं नहीं आती। तो यस, ये वर्ड्स किसने किसको कहे? आंसर इज ममा माउस सेड दिस वर्ड्स टू हिकरी डिकरी डॉग। तो ये ममा माउस ने ये वर्ड्स किसको बोले थे? हिकरी डिकरी एंड डॉग। क्लियर? कि घर पर ही रहो जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, वेयर वाज द स्पीकर गोइंग? जो स्पीकर मतलब मम्मा माउस थी, वो कहां पर जा रही थी? कहां पर गई थी? आंसर इज मम्मा माउस वाज गोइंग इनटू द हाउस टू लुक फॉर फूड। मम्मा माउस उस हाउस में गई, मतलब उस हाउस जा रही थी, और किसकी सर्च में? लुक फॉर फूड, फूड की तलाश में जा रही थी, है ना। नाउ नंबर 3 इज हियर, व्हाट हैपेंड आफ्टर द स्पीकर लेफ्ट? क्या हुआ जब मम्मा माउस वहां से लेफ्ट होगी, वहां से चली गई? Now, after Mama Mouse left, the three mice also went into the house through the same crack in the wall. देखिए, जब मम्मा हाउस वहां से चली गई, जो तीनों जो माइस थे went into the house, उस घर में गए, through the same crack in the wall. उस वॉल के अंदर जो भी क्रैक थी, उसी सेम क्रैक से वो भी उसी हाउस के अंदर चले गए थे। Now, second line is here. Suddenly, Dickory let out a squeal of joy. अचानक Dickory मतलब खुशी की इसमें खुशी से वो चिल्लाया। अब देखते हैं क्यों चिल्लाया, देखते हैं। Why did Dickory let out a squeal of joy? क्यों खुशी से वो Dickory चिल्लाया था? Yes, answer is Dickory let out a squeal of joy because he had found a half a bun to eat. क्योंकि उसको वहां पर एक क्या मिल गया था? हाफ बन मिल गया था खाने के लिए। Now, question number 2. Why did the three mice do next?
थ्री माइस ने आगे क्या किया? नाउ थ्री माइस हर्टली एट द बन अंटिल दे फिनिश्ड इट। जो तीनों माइस थे उन्होंने हैप्पीली उस बन को खाया। यस, एट इज हियर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट। ओके, अंटिल दे फिनिश्ड, जब तक उन्होंने उसको समाप्त नहीं किया, खत्म नहीं किया, तब तक वो उसको हैप्पीली उस बन को उन्होंने खाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, डू यू थिंक दे हैड अ गुड टाइम? क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने दे हैड अ गुड टाइम, उनका ये बहुत ही अच्छा समय था? यस, आंसर इज यस, दे हैड अ गुड टाइम, बट दे वर आल्सो स्केयर्ड व्हेन द गॉन्ग ऑफ द क्लॉक साउंडेड। हाँ, उन्होंने बहुत ही अच्छा समय निकाला, लेकिन वो एंड में क्या हुआ था? वो डर गए थे। स्केयर्ड में सब आल्सो वी यूज द वर्ड अफ्रेड। वो डर गए थे। क्यों डर गए थे? व्हेन द गॉन्ग ऑफ द क्लॉक साउंडेड, क्योंकि जो क्लॉक का जो गॉन्ग था उन्होंने तेज बोला, उसका जो साउंड था बहुत ही लाउड था, तो इस वजह से वो क्या हो गए थे? वो स्केयर्ड हो गए थे, वो डर गए थे। बट ऑलमोस्ट दे हैड अ गुड टाइम, हालांकि उन्होंने अच्छा समय व्यतीत किया था। Okay, so this is all about the chapter. We already discussed the word meaning, question answer, and dictation word of this chapter. Okay.